Students, now let us look at an interesting model that is for the critical factors or factor rating model. We call it, the complete name would be the weighted factor rating model. The objective of this model would be to compare the effectiveness, attractiveness of several locations along a number of quantitative and qualitative dimensions. तो आपके पास दोनों किस्म की डायमेंशंस हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी. इन अदर टर्म्स हार्ड फैक्टर्स, सॉफ्ट फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं. ऐसे फैक्टर्स जो शायद रिलायबली मैयर किए जा सकें, ऐसे फैक्टर्स जो शायद रिलायबली मैयर ना किए जा सकें. सो व्हाट वुड बी द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग सच एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है, उसको कैसे आप कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन assign weights to each factor. The weight sums to 1. आपने normalized weights उनको assign करने जो कि total 1 weight आपके पास बन जाएगा. Weight assignment कैसे होगी? If you have gone through analytical hierarchy process, that is the procedure actually through which आप weights को जो है वो determine कर सकते हैं for those factors. तो analytical hierarchy process AHP process है, which you may have learned in some of your courses. तो उसको जो है उसकी मदद से ये weights को जो है वो you can find it and you can normalize it. Determine a score for each factor. Now then you need to actually determine the score for each factor. Multiply the factor score by the weight. जो factor का score है उसको उसके weight के साथ multiply कर देंगे. Then sum the weighted score. A sum ले लें. That summation will actually give you the location with the highest total weighted score is the recommended location. So जिस location पर आपके पास सबसे ज़्यादा weighted score आएगा, that would be the best location under those factors. उन factors में वो best एक location है. तो बड़ा एक simple सा scenario है जो weights की सूरत में लिया गया है. So let us see an example for it. एक example इसके लिए discuss कर लेते हैं. So following factors has been identified as critical factors to making location decisions among the 3 countries of China, Singapore and Indonesia. एक example ली गई है, China, Singapore और Indonesia आपके पास मौजूद हैं. A group of functional managers has determined the factors weight. Factors को भी determine किया है एक टीम ने, उनके weights को भी determine किया है and score to be used in the analysis, और जो score उसके अंदर use किए जाएंगे. So how is that? So if you see, there are factors. Factors are the labor cost, proximity to market, supply chain compatibility. That means कि suppliers कितने closely available हैं, आपके distributors कितने closely available हैं, transportation का scenario क्या है, logistical cost क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी. Quality of life, of course, CSR से related है, corporate social responsibility है, employees के लिए क्या quality of life और उनके बच्चों के लिए education is there, everything is there, ये उसके लिए एक factor define कर दिया गया. Then stability of government, let's say stability is an important factor जिसको हमने discuss किया था. Now they have assigned the weight. Analytical hierarchy process भी define किया जा सकता है और it could be the subjective ones. ये subjectively भी determine किए जा सकते हैं and there are many ways. Delphi method आपने कभी डिस्कस किया हो फोरकास्टिंग में, वो भी इन वेट्स के असाइनमेंट के लिए यूज हो सकता है. अगर आपने क्वालिटेटिवली लेना है, एक्सपर्ट ओपिनियंस यूज की जा सकती हैं और ये टीम डिटरमिन करेगी व्हाट इज दैट. सो 20% वेस्ट हैज बीन एलोकेटेड टू लेबर कॉस्ट, 15% टू द प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, सप्लाई चेन कंपैटिबिलिटी 25.25, दैट इज 0.30 फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज 0.10, that is the 10%. Total आपके पास ये weight should be 1. So, what are the scores? Maximum of 100 के हिसाब से they have given their preferences from 0 to 100. ये 0 to 100 जो है वो preferences दी जाएंगी और intermediate values हो सकती हैं. So that means a labor cost पे, if you see China is the most preferred one, 100 out of 100 score has been assigned by that functional team. Then proximity to market, 100 out of 100. Then 80 for the supply chain compatibility, 70 for the quality of life, and stability of government, 80. Then for Singapore, labor cost के मुकाबले में it's more on the lesser side, 40. Then 60 for the proximity to market, 80 for the supply chain compatibility, but for the quality of life, it's 90.
and then for the stability of government, it's 100. So, but about Indonesia, it's like 90, 80, 60, 60, and 50. So what would you do if you see the solution? First of all, आपने weighted score find कर लेना है तीनों countries के लिए. तो for China, it would be the weight multiplied by the respective score. So 0.20 into 100. Then plus sum करना है आपने सबका 0.15 into 100. Then 0.25 into 80. Then 0.30 into 70. Then 0.10 into 80. So you get the overall score. इसी तरह आप सिंगापुर के लिए फाइंड कर सकते हैं और फिर इंडोनेशिया के लिए फाइंड कर सकते हैं. So based on the total weighted score, China would be the recommended one. Why? Because we have a score of like 84 for them, which is higher than Singapore's score of 74 and Indonesia's 68. So what would be the location decision in our case now? अगर आपने देखा हो, तो it depends upon the factors which we have evaluated and the weights which we have assigned to those factors. ये उस पर depend कर रहा है. Obviously, it depends upon the skill or the expertise of the managers or the team which is actually performing that function. But if it is like unbiased, most of the time the decision making would be good. Thank you.